Hello guys, today I am coming back with a new topic from class 10, chapter 10, Refraction by spherical lenses. Now, what is called lens? What is called lens? Lens is nothing, just only combination of two mirror. That is the lens. Lens is what? Just combination of two mirror. What will be formed? That is the lens. Say, here is it is a plane mirror and it is a convex mirror. So one is plane and another is spherical. But what name? The convex. So name of this lens is plano convex lens. Another one, that is the plane mirror and it is a spherical mirror. That is the what name? That is the concave. So name of this lens, it is a plano concave lens. And it is what? It is combination of two spherical mirror. It is combination of what? The two spherical mirror. The both spherical mirror is a what? The convex nature. So this mirror is this combination lens will be also the convex lens. That is called just convex lens. Why? Both the convex mirror are combined and form the lens. So it is the what? Convex lens. Now see, it is the another one types of lens where it is a what types of mirror combined? It is a concave mirror and it is what? It is another one concave mirror. ये भी concave है, ये भी concave है. तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? It is a lens. It is a lens. That means this lens also will be named what? Concave lens. That is the concave lens. ये lens को क्या कहेगा? ये concave lens. तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया है क्या? लेंस क्या है? लेंस जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर. दो मिरर कॉम्बाइन होके वो क्या बन जाता है? एक लेंस बन जाता है. दोनों कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा तो कॉम्बाइन होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस, और दोनों कॉन्केव मिरर कॉम्बाइन होने के बाद क्या मिलेगा? वो आपका कॉन्केव लेंस होगा. फिर आइए, ये दो कॉन्वेक्स दो स्फेरिकल मिरर है. मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर है. इससे आप लोग सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से इसे कार्व बना दिया. ये एक तो कार्व है. ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर. फिर ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या आ गया? इधर होंगे आपका एक सेंटर. ये आपका होगा सेंटर. तो दोनों कॉन्वेक्स मिरर मिलके क्या बन गया? ये बन गया है कॉन्वेक्स लेंस. मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस में कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया? ये कर्व का एक सेंटर, ये कर्व का एक सेंटर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया. दोस्तों कितना आ गया? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया. तो मान लीजिए इसका C1 और ये आपका C2 मान लीजिए. तो क्या होगा? एक स्फेरिकल लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. क्यों होता है? यहाँ पे दो कर्व मिलाकर एक लेंस बन जाता है. इसलिए अभी मान लीजिए ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्वाइन कर दीजिए. ज्वाइन करने के बाद एक क्या मिल जाएगा? एक एक्सिस मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा.
और ये एक्सिस को हम लोग मानेंगे क्या, इसका कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होंगे आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ में जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस denoted by O and it is called optical center. ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों आपका क्या है, C1 C2, ये आपका सेंटर ऑफ द टू कर्वेशन। यहाँ में आप क्या करेंगे, ये जो C1 है इसका हम लोग ट्वाइस F1 मान लेंगे, और जो C2 है यहाँ में हम लोग ट्वाइस F2 मान लेंगे। और ये F1 ट्वाइस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर का जो बीच में होंगे वो होगा आपका फोकस। तो ये फोकस होंगे क्या, ये लेंस का फोकस है, ये F1, ये कर्व का फोकस यहाँ में होगा, ये होगा F2। मतलब यहाँ में क्या है, ये फोकल लेंथ, ये ट्वाइस फोकल लेंथ, इसलिए ये आपका आ गया है ट्वाइस F1। और ये होंगे, ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, ये होगा आपका ट्वाइस F2। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स दैट इज द मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का उसको बोलेगा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रहा आपका कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मतलब ये दोनों क्या होंगे, कॉन्केव मिरर कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। दो कॉन्केव मिरर का कॉम्बिनेशन होने के बाद ये जो लेंस बन जाता है, ये लेंस होगा आपका कॉन्केव लेंस। इट इज अ कॉन्केव लेंस। The center point of this lens also the optical center। यह भी आपका दो होगा सेंटर ऑफ कर्वेशन, ये भी होगा, ये कर्वेशन के लिए सेंटर ऑफ कर्वेशन C1 C2। तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेशन एंड दोनों सेंटर ऑफ कर्वेशन combined or joining line is called what, the principal axis। ओके, सो यह में हम लोग को अभी पता चल गया है, we know that the what is the principal axis, what is the convex lens, what is the concave lens। Now this convex lens also called or known as the converging lens। what lens, converging lens। जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है, सपोज ये इट इज वन लेंस, सपोज a combination joining line, ये F2। Suppose when the parallel ray of principal axis, it is will be the refract change the direction where on the combination, on the boundary of the combination of two mirror means the this refract from the middle, from here and to passes through the focus F2। Like another ray, this one also passes through the focus, and another ray it is passes through the focus। and another one thing is that ये जब ऐसे पैरेलल होकर आएगा, आपको ये रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होंगे, यहाँ में बेंड नहीं होगा, और ये आपका इधर लास्ट जाके यहाँ से भी बेंड नहीं होगा। ये बेंड कहाँ पे होगा, ये मिडिल पॉइंट से बेंड होगा। मतलब ये आपका बेंड होंगे यहाँ से, इट विल बी बेंड फ्रॉम द मिडिल, नॉट फ्रॉम द इनिशियल और द लास्ट पॉइंट, मिडिल। Now see, we give the some parallel rays of the
principal axis, all the rays are passes through the focus point, means all are intersect, meet at a point, means it is called for converge. This phenomenon is called for converge. इसके आपको converge कहते हैं. So therefore this lens is called for convergence lens. और ये मान लीजिए कॉन्केव लेंस F2, ये होगा रहा F1. तो ये पैरेलल के जब जाएगा ये आपका बैंड यहाँ में आके नहीं होंगे, पहले बोल दिया, और नहीं यहाँ से बैंड होंगे, लेकिन ये बैंड कहाँ पे जाके होंगे, ये मिडिल पॉइंट में जाके ये आपका बैंड होंगे. ये बैंड कैसे होंगे, ये बैंड ऐसे एक डायरेक्शन में होंगे जिसको हम लोग एक्सटेंड करने में क्या ये यहाँ पे जो एफ है एफ में आके मिल जाता है, ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे एंगल में होंगे. फिर सपोज ये भी एक आपका पैरेलल रे है, ये भी आपका बैंड होंगे, रिफ्रैक्शन होंगे, मतलब ये आपका क्या ऐसे बैंड होंगे जब इसको एक्सटेंड करने में ये एफ में आ जाता है. इधर से भी एक दे दीजिए, ऐसे जाएंगे, फिर ये एफ में आ जाएंगे. इसे एंगल में ये बैंड हो जाएगा, रिफ्रैक्शन सेंस होगा डायरेक्शन क्या, जब उसको एक्सटेंड करने से F1 में मिल जाएगा. मतलब ये ऐसा लगेगा क्या, ये रे आपका यहाँ से, ये रे आपका F1 से आया हुआ है, लेकिन ये आया नहीं है. तो ये क्या हुआ, ये इधर उधर गया, सब इधर गया उधर गया, ये स्प्रेड होते जा रहा है. मतलब ये आपका क्या हुआ, ये डाइवर्स होते गया. तो इसलिए इसको बोलेगा क्या, डाइवर्जेंस लेंस. डाइवर्जेंस लेंस, ये रहा आपका डाइवर्जेंस लेंस, क्योंकि ये रे आपका डाइवर्स होते जा रहा है. और ये आपका कॉन्वर्जेंस लेंस, क्योंकि और पैरेलल बीम ऑफ रे आर कॉन्वर्ज, मीट एट ए पॉइंट. Now another one things, that is the image formation in convex lens. Image formation in convex lens. Image formation in convex lens. तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, पहले हम लोग जानते हैं ये इमेज फॉर्मेशन, ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, इसका रूल्स जान लेते हैं. सपोज इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका रहा ऑप्टिकल सेंटर, इट इज ऑप्टिकल सेंटर, इट इज F1, it is F2. So when the incident ray like this parallel to the principal axis, it is the number one rules. Parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the focus point. Second, ये पैरेलल होने के लिए कहाँ से, जहाँ से भी इसे पैरेलल हो जाएगा, ये फोकस से जाएगा. सपोज एक रे ऐसा हो सकता है, ये आपका फोकस से गया, क्या से, फोकस से गया, तो ये क्या हिसाब से ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे will be the bend, will be the angle like this. This ray, refracted ray will be parallel to the principal axis. What will be the direction, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस का हमेशा पैरेलल होंगे जब ये इंसिडेंट पे फोकस पॉइंट से जाएगा. और तीसरा, जब ये इंसिडेंट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, एट दैट टाइम दिस रे will that time this ray does not, ये को भी डायरेक्शन सेंस नहीं करेगा, ये
डायरेक्शन में ये चला जाएगा। और ये तीनों रे है, रे का ये रूल्स है, और ये भी 1 2 3 ये तीनों हम लोग को क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्टेड रे। कोई भी दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिल जाएगा, इंटरसेक्ट होगा, तो वहाँ में हम लोग को मिल जाएगा क्या, इमेज। Where the two refracted rays, 2 or more refracted rays will be intersect, at that point we will get the image. Now let's go how to form the image in convex or converging lens. Number 1, object placed at infinity. Now say suppose ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हिसाब से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, ये होगा F2। So the ray coming from the infinity, suppose parallel ray of principal axis, it passes through the focus. Another, it is the parallel to the principal axis, passes through the focus. So it is the one refracted ray and it is another one refracted ray. Then two refracted ray will be intersect at F2, means the image will be formed at F2. But what is the size? Is these two refracted ray really intersect? See, yes, really intersect. Comes and intersect where? At F. That means this image will be formed real, and real image always the inverted. And second, this image will be formed where? At F. That is the position of the image. And the size of the image is the very small, like a point. So it is called what? The point size. That is point size. Size is the point size. As well as now you go to the keep the object placed beyond twice F1. Now see what will be like this. This is the convex lens. This principal axis. It is optical center. F1, F twice F1. So this distance and this distance must be same, and here also this distance and this will be the same, F2 and twice F2. The object placed beyond F1 means here, suppose here we place the object here. हम लोग कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ में रख दिया। ये आपका हो गया पैरेलल रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे कहाँ से जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रे passes through which point? The point is the focus point. Now you see, you give the another more ray. Suppose one ray incident ray passes through the focus. Then this refracted ray will be the change the direction in which angle, like this angle, which angle, this angle like this, the refracted ray will be the parallel to the principal axis, like this, parallel
is the image, and that is the size of the image. It is suppose image. Suppose A, B object, then A dash, B dash image. Now see, the refracted ray really intersect at the point this, so that's why the image will be the real image. A real image is the like inverted, and the size of the image will be the smaller than the size of the object. Let's go when the object placed at twice f1. Now you see this object placed as twice f1. ये रहा आपका लेंस, ये f2 twice f2, f1 twice f1. So when object placed here, at that times like this is passes through the f2. Another ray, suppose from f, it is the f, then you see it will be the parallel to the principal axis. The image will be here. When we give the object at twice f1, the image will be formed at twice f2, and it is the size of the image. The image will be what? They are really intersect, so image will be real and inverted. क्या है? Real and inverted. और ये size of the image will be the size of the object. Means the equal size will be equal of the object. Position at the twice f2. Image will be formed. Like this, when the object placed between twice f1 and f. Twice f1 and f1. ये आपका होगा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ये मान लीजिए ये आपका होंगे क्या? ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, f1 twice f1, f2 twice f2. Suppose object placed here, then it is a parallel ray passes through the what? Focus. Suppose another ray which passes to the optical center. At that time, these two rays intersect where? The beyond the twice f2, means the between the twice f2 and infinity. Now see, the image will be really intersect. So refracted ray will be really intersect. So that's why it is the real image, real and inverted. Real image हमेशा क्या होता है? Inverted होता है. Size of the image, the size of the image is larger than the size of the object. ये size of the object है और ये size of the image है. तो ये image का size क्या हो रहा है? ये image का size ये object से बड़ा होंगे, मतलब magnified. Next, object placed at f1 at f1. Object placed at f1.
ये मान लीजिए F1 twice F1, F2 twice F2. Object place here, ये ऑप्टिकल सेंटर, अब ये इंसिडेंट रे after refraction passes through this F1. Yes, am I right? Yes. And another one ray which is passes the optical center. At that times you see these two rays are very like that the parallel, means they will be intersect but not here and there, will be intersect here at infinity distance which we will not able to see, जिसको हमको दिखाई नहीं देगा, कहाँ पे होंगे, इंफिनिटी डिस्टेंस। तो ये बार ये रियल इंटरसेक्ट होंगे, मतलब ये इमेज भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका जो साइज है, ये साइज है आपका हाईली मैग्नीफाइड, क्या होंगे, हाईली मैग्नीफाइड, ये बहुत बड़ा होंगे, और एफ में रखने से बहुत बड़ा हो जाता है, कहाँ पे, इंफिनिटी में। इंफिनिटी में रखने से एफ में फॉर्म हो जाता है, लेकिन वो वेरी पॉइंट साइज हो जाता है। पॉइंट साइज क्या है, पॉइंट साइज। नाउ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 and optical center O। अभी देखिए ये क्या बनता है, ये लेंस से ये आपका रहा F2, ये ट्वाइस F2, ये आपका F1 ट्वाइस F1। ऑब्जेक्ट यहाँ में है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। मान लीजिए ये पैरेलल रे है, पैरेलल है, ये बैंड के कहाँ से जाएगा, पासेज थ्रू द F2, और एक टू मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या, ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगा क्या, कभी मिल सकता है, नहीं, कभी नहीं मिल सकता। तो हम ये दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों का डायरेक्शन में, ये ऐसा डायरेक्शन में एक्सटेंशन करेंगे, तो बैक साइड में दिखाई देगा ये दोनों ऐसा लगेगा, ये दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब हम लोग को ऐसा लगेगा कि इसका जो इमेज है, द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द लेंस, in front of the lens, but this is the image form not really when we extend, apparently they intersect apparently, so that's why this image is for another one name, that is called for partial image। ये होंगे आपका partial image, partial image, ये होंगे आपका partial image। और ये साइज ऑफ द इमेज आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये आपका ए बी साइज है ऑब्जेक्ट का, ये ए डैश बी डैश इमेज का साइज है। आप लोग बताइए, यू से द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस, साइज ऑफ द इमेज इज दिस, व्हाट इज द साइज, साइज इज स्मॉलर और लार्जर, ये साइज ऑब्वियसली एनलार्ज, लार्जर, मैग्नीफाइड, द साइज विल बी द मैग्नीफाइड, and nature is partial image and erect image। erect मतलब सीधा है, सीधा इमेज, ये आपका erect image and partial, और साइज क्या है, मैग्नीफाइड है, इसका पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, the image formation in concave lens, concave
लेंस है, ये है आपका कॉनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यहां से आ रहा है, ये आपका F1 है, ट्वाइस F1 है, ये आपका मान लीजिए F2 ट्वाइस F2, यस इंफिनिटी से आ रहा है, ये रिफ्रैक्शन होंगे, कैसा रिफ्रैक्शन होंगे, ये कहाँ डाइवर्स हो जाएगा, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब इस तरह डाइवर्स हो जाएगा। When extend, this one will be meet to the F1। मान लीजिए ये और एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका डाइवर्स हो जाएगा ये डायरेक्शन में, ये दोनों तो हम लोग को भी मिलेगा ही नहीं, को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों apparently will be the intersect where at F1, so that's why the image will be what, partial, नेचर होता है इमेज पार्शियल, क्या इमेज होगा, हमेशा के लिए पार्शियल होगा। पार्शियल इमेज क्या होता है, सीधा होता है, मतलब इरेक्ट है। और ये इमेज का साइज देख लीजिए, ये इमेज का साइज क्या है, वो कॉन्वेक्स में भी था, वो इंफिनिटी डिस्टेंस में पोजीशन होने से, प्लेस करने से हम लोग कहाँ मिल रहा था, एफ में, और वो पॉइंट साइज यहाँ में भी हो जाएगा क्या, ये पॉइंट साइज वेरी वेरी स्मॉल, इसका हम लोग पॉइंट साइज कहते हैं, पॉइंट साइज कहते हैं। तो और एक ट्री है, ये कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यहाँ में आपका कॉन्वेक्स का जैसा ये ट्वाइस F1 ट्वाइस F1 एंड F1 का बीच में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ दो टाइप्स पोजीशन में ये इमेज फॉर्म दिखाया जाता है यहाँ पे। अभी देखिए लेंस, ये रहा आपका लेंस कॉनकेव लेंस, ये है आपका F2, ये रहा ट्वाइस F2 F1 ट्वाइस F1। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हम लोग इन फ्रंट में यहाँ में रखते हैं ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रे, ये कहाँ से जाएगा, डाइवर्स होते जाएगा ये डायरेक्शन में। मान लीजिए दूसरा एक तो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ये तो डाइवर्स नहीं होंगे, ये रिफ्रैक्शन भी नहीं होंगे, सीधा ही चला जाएंगे स्ट्रेट, दिस वन पास स्ट्रेट लाइन एंड दिस टू रे इंटरसेक्ट हियर, so it is the image, but this image is what, the partial image, it is the extended, this ray originally passes through this direction, but it is the extended direction, so that's why it is the partial image, the really not comes this ray this part, so it is the partial image, and size of the image is smaller or diminished. Partial and erect size will be the smaller or diminished in size, okay। ये यहाँ में हम लोग को ये मालूम हो गया, जो कॉनकेव लेंस है वो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द पार्शियल एंड erect image, and it is also the smaller than the object, the image. But convex lens from the real image may be point size smaller, larger, equal, and
ओनली इन वन पोजीशन आप लोग देख रहे हैं जहाँ में ऑप्टिकल सेंटर और F1 में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, वो इमेज हम लोग को पार्शियल दिखाई देता है और वो भी साइज बड़ा है एनलार्ज से, बट द पार्शियल ओनली वन पोजीशन में कॉन्वेक्स लेंस का पार्शियल है। वो कौन सा पोजीशन, ऑप्टिकल सेंटर और F1 का बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है। और एक कॉन्केव लेंस में हमेशा हमेशा के लिए एट द ऑल द पोजीशन ऑलवेज फ्रॉम द partial and erect image. Okay, clear? Okay. Now another one topic, that is the power of lens. Power of lens. Power of lens किसके कहते हैं? अब देखिए power of lens, power means क्या है? The ability to doing कोई भी काम करने का जो एबिलिटी है वही पावर है। कोई भी यूनिट टाइम में जितना काम कर सकता है उसका पावर इतना है। लेकिन यहाँ में जो पावर ऑफ लेंस का क्या काम है, लेंस का काम है कॉन्वेक्स लेंस हो तो वो कन्वर्जिंग करेंगे, जितना कन्वर्जिंग कर सकता है उसका पावर इतना ही ज़्यादा है। और जो डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस है, उसका क्या काम है, उसका डाइवर्स करना काम है। वो जितना ज़्यादा डाइवर्स कर सकेगा उसका इतना पावर माना जाएगा। और ये जो पावर ऑफ लेंस है, ये पावर ऑफ लेंस एक वन टर्म्स के साथ जड़ित ये डिपेंड है। वजह से मान लीजिए ये आपका